with what is working capital. This is what we do. The second part is known as review of the literature. रिव्यू ऑफ द लिटरेचर का मतलब होता है जो मैंने क्वेरी कहा आपसे, दूसरों ने क्या कहा है, क्योंकि आप पहली बार काम करने नहीं जा रहे हैं, इसमें बहुत लोगों ने काम कर लिया, उनका क्या करना। आप जो खोजने की बात तलाश रहे हो, क्या दूसरा कोई तलाश चुका है कि? और अब जो एडवांस रिसर्च हो रहे हैं उसमें रिसर्च गैप की बात की जा रही है। पहले कॉमर्स में, आर्ट्स में, मैनेजमेंट में रिसर्च गैप नहीं होता, साइंस में हुआ करता। रिसर्च गैप का मतलब होता है कि ये जरूरी नहीं है कि एक रिसर्चर की अपनी एक लिमिटेशन होती है, वो सारी चीजों को देख, जो पार्ट उससे रह जाता है अंत में वो लिखता है कि these are the various things which have been left over by, और वो जो चीजें जो रह गई हैं वो एक दूसरे नए रिसर्चर के लिए क्या बन जाती है, they become the topic. आप रिव्यू ऑफ द लिटरेचर बहुत जरूरी है। हम बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं उस पर, नकल करके 8-10 लोगों का कुछ लिख लेते हैं, उस पर कभी बेईमानी नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो वही एक खास पीरियड होता है तुम्हारे लिए, when you come to know or when you have the knowledge about that topic, you go in the depth of the topic. फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी करते हो, स्कोप ऑफ द स्टडी करते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हो, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करते हो, चैप्टर प्लान की बात करते हो, और फिर उसके बाद आप लिमिटेशन, कम एट द लिमिटेशन। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप रिसर्च में आए हैं, कभी इसको बोझ मत मानिएगा, यार ये तो बोझ है, नहीं, शौक पैदा करिए। और अगर हम कोई काम शौक से करते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा, वो काम कहीं ना कहीं इट गिव्स यू रिवॉर्ड इन योर लाइफ। तो पहली चीज ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। रिसर्च में दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज द पेशेंस। इफ यू डोंट हैव पेशेंस, कई बार 100 पन्ने पढ़ने के बाद हमको अपने रिसर्च से रिलेटेड एक लाइन नहीं मिलता, then you have to control yourself. If you don't have patience, you will not be able to carry your research. Third thing, your guide. Always be very much careful at the time of selecting your guide. Whether he is having an academic sense, कहने को तो क्लास में 50 विद्यार्थी होते हैं, लेकिन क्या रियली all those 50 just deserve as a विद्यार्थी? ये आपसे अच्छा कोई इसका जवाब नहीं दे सकता। So, what is the most important thing at the time of selecting the guide? To be very cautious. Whether that fellow is having academic sense to deal with you, to deal with the topic, to do justice,
And the fourth important thing